हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं ग्रीन तत्वा टॉक्स। Lately, we have been hearing a lot of news about the cleaning campaigns which are already going on in all the country. Like abhi recently मैंने एक news पढ़ी that the Ludhiana Municipal Corporation organized an event to promote Swachhata and recycling of waste in Rose Garden. The similar initiatives were taken in Bhubaneswar and Guwahati to make heritage sites plastic free and address waste management issues. Similarly, the Sambalpur Municipal Corporation launched an outreach program to educate domestic helpers about waste segregation. So there are a lot of initiatives which have been taken care by individuals, by NGOs, by teams for promoting the environmental concerns and by cleaning. और इसी तरह की एक न्यूज जो मैंने अभी 10-12 दिन पहले ही पढ़ी, it was about Kanpur Ploggers who gathered on Sunday at the Visarjan Ghat, which was post Ganeshotsav, and collected around 1000 kg of plastic and other non-degradable waste from the banks of Ganga. So there were around 50 ploggers who gathered at the Visarjan Ghat. So now, why am I discussing this? Because we all know that festivals are going on. अभी हमने गणेश उत्सव अभी just over हुआ है. Will be ongoing with the Navratri, Durga Puja, followed by Diwali. What we don't realize it, even it might not sound good, but what is increased as an aftermath of festivals is the waste. We don't realize कि festivals खत्म होने के बाद हम कितना waste generate कर देते हैं and we pile up the landfills too unknowingly. We never realize कि हमारे फेस्टिवल्स ओवर होने के बाद सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, कितनी ही ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो जमा होकर हमारे घर से तो उस काले डस्टबिन के बैग में निकल जाती हैं, बट वे डू दे लैंड अप? दे लैंड अप आफ्टर अ बिग जर्नी, ऑल्दो ओनली इन द लैंडफिल्स. सो इन सबको डिस्कस करने के लिए अभी अभी मैंने आपसे जो एक जिक्र किया वो था कानपुर ब्लॉगर्स का. तो आज ग्रीन तत्वा टॉक्स में मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीवनी शर्मा, हु इज आल्सो नोन एज मॉमी गंगाकिनारेवाली, जिनसे हम बात करेंगे कि व्हाट इज कानपुर ब्लॉगर्स ऑल अबाउट एंड व्हाट इज ब्लॉगिंग अबाउट. सो फॉर दैट लेट्स वेलकम डॉक्टर संजीवनी शर्मा to the Green Tatwa Talks. Good evening, Dr. Sanjeevani. How are you doing? Good evening. Thank you for having me. I'm doing great. Glad to have you on Green Tatwa Talks. Thank you. It's an exciting opportunity for me, and I love your podcast. I keep listening to it, and you're doing a great job at raising awareness on environmental issues through your podcast. Thank you very much, Dr. Sanjeevani. So before we begin, a little about Dr. Sanjeevani. Dr. Sanjeevani is a dentist, gold medalist in that. She's a blogger and founder of Kanpur Ploggers. It's a youth-based community that has been cleaning the ghats of the Ganga River in Kanpur city for the last 1 year. She is a TEDx speaker. She's a zero waste promoter and she also has a small business that Green Pouch. हम इस सब के बारे में थोड़ा और ज्यादा विस्तार से ऑफ कोर्स जानेंगे डॉक्टर संजीवनी से. So डॉक्टर संजीवनी, before I begin, I will call you that you are dentist by profession and blogger by passion. तो जो ये वर्ड हम यूज करते हैं ब्लॉगर या ब्लॉगिंग, I would like you to tell us about what ब्लॉगर्स एक्चुअली इज ऑल अबाउट, बिकॉज जहां तक मैं जानती हूँ इस वर्ड को ज्यादा लोग अभी भी जानते नहीं हैं. लोग ब्लॉगर के पी को भी कई बार सुनने में गड़बड़ा जाते हैं. दे थिंक इट्स अ ब्लॉगर, और ब्लॉगर क्या है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट दिस ब्लॉगर्स इज ऑल अबाउट एंड आपने कानपुर ब्लॉगर्स ये कैसे, कब और क्यों स्टार्ट किया. प्लॉगिंग वर्ड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने. It is basically a Swedish term and a combination of two words, that is pick up and jogging. So he had tweeted about a post where he was running on the beach in Kerala and he was picking up litter from the beach while he was jogging. Right. So I was very intrigued by the word and I had searched about it. And blogging is basically a movement that has put the responsibility of a clean city into the hands of the citizens. This movement claims that it is not the responsibility of just the local municipal corporation to clean your area or the sanitation workers to clean your city. You can also find time for an hour or so in a week and keep your city and your premises clean. Absolutely. So this is what blogging is.
it was just, I would say that it was just a good marketing idea for keeping the name Kanpur Ploggers, because the youth likes to call themselves as ploggers. Mm-hmm. मैं कोई ओल्ड फैशन नाम रख देती अगर इस ग्रुप का, स्वच्छता समिति या ऐसा कुछ, तो इन माय माइंड मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट यूथ है, जेन जी है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, एंड वी नीड टू कीप री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स with the flavor of the season, right? I So agree. I use this term to introduce the idea of cleaning your local areas. It's not कि पहले कभी होता नहीं था, पहले भी होता था, बट Mm-hmm. हाँ, अब से जैसे जब से स्वच्छ भारत मूवमेंट हैज गेन्ड मोमेंटम, Mm-hmm. प्लॉगिंग वर्ड हैज आल्सो गेन्ड मोमेंटम, एंड इट इज फाइंडिंग its place in even the government documents. They keep releasing requirements and send it to local municipal corporations that प्लॉगिंग ड्राइव आपको ऑर्गेनाइज करानी है अपने सिटी में. So it is Mm-hmm. slowly gaining popularity and people are getting used to the word. Right. सो लिसनर्स, जैसे कि अभी डॉक्टर संजीवनी जी ने कहा कि प्लॉगिंग इज लाइक व्हेन यू आर रनिंग अलोंग विद दैट. सो रनिंग हमें पता है इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड पिकिंग अप लिटर इज सर्टेनली गुड फॉर द प्लैनेट्स हेल्थ. एंड व्हाई नॉट कंबाइन दीज, एंड दिस टर्म वाज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड प्लॉगिंग, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉगिंग विद पिकिंग अप लिटर. सो जैसे कि उन्होंने कहा कि इट्स अ स्वीडिश टर्म जिसका नाम है प्लॉका अप, जिसको हम प्लॉगिंग अपनी इंग्लिश में कहते हैं. सो प्लॉगिंग इज समथिंग जब आप भाग रहे होते हैं और आपको अपनी दोनों तरफ कचरा दिख रहा है तो उसे प्लीज अनदेखा ना करें. बी अ प्लॉगर, पिक दैट अप एंड पुट इट इन द ट्रैश बिन. एंड डॉक्टर संजीवनी की जब बात करते हैं तो थ्रू कानपुर प्लॉगर्स, जो कि उनका इनिशिएटिव है, शी एंड हर टीम हैव कंडक्टेड वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स एंड प्रिवेंटेड मोर देन 10,000 किलोज ऑफ प्लास्टिक एंड अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम रीचिंग द गंगा रिवर. ये हमेशा न्यूज़पेपर्स में छाई रहती हैं, बिकॉज मैंने जब इनके बारे में जाना तो आई वाज लाइक रियली इन ऑ टू सी कि मॉमी गंगा किनारे वाली हैज बीन डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, एंड दैट टू अलोंग विथ हर डॉक्टर प्रोफेशन. सो या मॉमी गंगा किनारे वाली से मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारा इनका इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी है मॉमी गंगा किनारे वाली, अलॉन्ग विद दैट कानपुर ब्लॉगर्स के साथ भी एसोसिएटेड है. सो डॉक्टर संजीवनी, आपने जैसे मुझे बताया कि आपने ब्लॉगिंग के बारे में इस तरह से जाना एंड यू हैड सीन दैट इनिशिएटिव लाइक ही वाज रनिंग एंड ही वाज पिकिंग द लिटर, तो आप उस वर्ड से काफी प्रोत्साहित हुई. Was there any other motivation behind it कि आपको जैसे इस वर्ड से पहले भी लग रहा था, या ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई मोमेंट हुआ था जिसके बाद आपको लगा कि यस ये मुझे करना चाहिए, या आपके दिमाग में ऑलरेडी ऐसी कोई चीज चल रही थी एंड सडनली यू केम अक्रॉस कि ओके ये वर्ड भी है? No, I never thought in the wildest dreams कि मैं लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ initiate कर पाऊंगी. No, the moment I was going to pick up trash from the ghat for the first time in my life, I was not realizing that this is going to change my life. So I was in Rishikesh, walking at a ghat and just wondering, what my purpose in life is. Mid-30s में, according to what the spirituality scriptures says, mid-30s में आपको एक ये phase आता है life में जब आप सब कुछ achieve कर चुके होते हो. उसके बाद भी आपको एक emptiness लगती है, and you keep asking yourself कि what exactly am I made for? I mean, I'm not made for just working, earning money or taking care of the family. Who am I? Right. So I was just walking on the ghat and I found a lot of plastic in that ghat, and it was a very serene and peaceful ghat. वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी. I just instinctively picked up a piece of trash from there, probably because there was no crowd there, so I felt very comfortable doing that. And within a span of 10 minutes, my family of 3, my son was just 3 or 4 years old at that time. We had picked up 2 big bags of plastic. So I realized what the enormity of the situation was, and that hesitation of picking up trash from a public place went from there. And I very on a fancy, I shared that in my Instagram stories because I used to keep talking about sustainability and single-use plastic. I got a lot of appreciation, and obviously that gave me a lot of confidence. And the next time I was walking in a Ganga Ghat in my city, Kanpur, which is infamously known for its litter, I realized that if I can do it at a tourist destination, why can I not do it in my own city and make it more beautiful?
So I just put up a story again that I want to do the same thing in my city now, Mm-hmm. and if I do it alone, it will take me a lot of time. Would you guys join me? So Right. I collaborated with a local male influencer in the city, and we gathered a crowd of around 60 people. Mm-hmm. So it was just, it was just meant to happen. Things kept falling into place. We got in touch with the municipal corporation. They offered us a truck that whatever trash will be picked, it can be loaded onto the truck, and it can be taken care of. Okay. So since the ways kept opening for me, it became very convenient for me. I realized that I can do this if the things are in my favor, the factors are Mm-hmm. in my favor. I can do this as long as I can get volunteers and I can get a truck. I think I can pull this off. And Wow, then I that. was very, very inspired by the Mumbai beach cleanup, which was run by Mr. Afroz Shah. I mean, it is still being run. They are into their, I think, 500th week or something. Yes. So I had read in an article that because of that beach cleanup, which had also become a mass movement, there, a lot of Bollywood celebs had also joined him. Mm-hmm. The tortoises had started laying eggs in that beach, which was once filled with 5 feet of trash. Right. So I realized that an impact can be created, and that piece of news kind of moved me. And I went through his interviews, and I realized that he's a lawyer by profession. I realized that maybe I should also do it on a regular basis, because doing it as a one-off event, one hour in 1 year, doesn't Mm-hmm. really make a difference. If you want to make an impact, it should be a consistent movement. It should be sustainable also. So Right. I took a pledge that let me just take care of it for the next 3 months, and then we'll see how it goes. Wow. And by the time 3 months ended, we were already a family of 200 volunteers who were feeling very incomplete if no plogging drive was all being organized on a Sunday morning. It had become a habit for us. And plogging in itself is a very, very satisfying activity. And spending Sunday morning at a Ganga Ghat, it's very good for health. It's the weather is so beautiful. Ma Ganga looks so serene. During the sunrise. So Right. it's a very good activity for your physical as well as for your mental health. So all of us got addicted to it, and now we are in our 125th week. Wow, that's great. हाँ, आपने अभी वीक की बात की तो मैं वही मेंशन करने वाली थी कि even the Kanpur Ploggers is running on their 125th week, and so far they have collected tons of plastics. Around 70,000 kg plus plastic has been recycled in association with the KMC Kanpur. And certainly, जैसे कि Dr. Sanjeevni ने कहा, our Mommy Gangakinarewali finds a joy in the lap of nature, and certainly this has helped her towards protecting this earth in her this initiative also. And she has been successfully organizing weekly cleanup drives at Ganga Ghats in Kanpur. So whoever in Kanpur, I'm sure Kanpur wale to aapko jante hi hain, but people in and around Kanpur, Mommy Ganga Kinarewali ko please follow kariye and जुड़िए उनके इनिशिएटिव के साथ, because as she said, ये सिर्फ हमारे ही मेंटल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये अर्थ, इस प्लैनेट अर्थ के भी क्लीनलीनेस एंड उसकी भी अच्छी हेल्थ को लेकर चीज है. बिकॉज इनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए है. सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हम रिड्यूस करें इसके यूसेज को, बट जितना रिड्यूस करते हैं उसके साथ साथ इस तरह के इनिशिएटिव्स भी जरूरी है जिसमें ऑलरेडी जो ट्रैश घाटों पे या लैंडफिल्स में जमा है उसको भी हमें कम करने की जरूरत है. एंड एज डॉक्टर संजीवनी वाज मेंशनिंग अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, so I would like to tell my listeners that she has already received many accolades from the municipal corporation and the national Namami Gange project for her contribution towards the conservation of the environment. So kudos to your initiative, Dr. Sanjeevni. I really wish you and Kanpur Ploggers all the best for whatever you people are doing. So ये बताइए कि when we talk of cleaning this घाट्स या क्लीनिंग द ऑलरेडी लिटर जो ऑलरेडी फैला हुआ है, आप एक इंडिविजुअली जब शुरू हुई थी, क्या ये ख्याल कहीं भी खटका था कि क्या मेरा इंडिविजुअल रोल इस क्लाइमेट एक्शन में रोल प्ले कर पाएगा? बिकॉज मुझसे ये कई लोग कहते हैं, लाइक मैं तो एक पॉडकास्ट करती हूँ, मैं इस तरह के अराउंड 40+ इंटरव्यूज अभी तक कर चुकी हूँ ऐसे लोगों से, आप लोगों से जिनसे हमें प्रेरणा मिल सके. बट हमेशा ये क्वेश्चन खटकता है और कई लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या
इंडिविजुअल का रोल सही में मायने रखता है, बिकॉज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग द थिंग्स ऑन द गवर्नमेंट. हमारे घर के दरवाजे से बाहर कचरा चला गया एंड दे फॉरगेट इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से कचरे को रिड्यूस करना है, हमें ये चीजें क्यों नहीं करनी है. सो आप जब शुरू हुई तो आपको अपने इंडिविजुअल रोल को लेकर कैसा लगा, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन थिंकिंग कि क्या एक इंडिविजुअल का रोल क्लाइमेट एक्शन में सच में हेल्प कर सकता है, एंड किस तरह से? Yes, I firmly believe in this thought कि individual, micro dictates the macro. It all has to start at an individual level, and I compare this mass movement or this mass fight against pollution and global warming with the war of independence in India. It all started with an individual thought. जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप 40-50 लोगों को इंटरव्यू कर चुके हो, तो हमारे जैसे लोग जो हैं अलग अलग सिटीज में स्कैटर्ड हैं, और वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मोस. Now that you are using various mediums to inspire people through you are using a podcast medium, I am using my Instagram handle and this NGO. There are others who are writing books about it, or maybe making documentaries on it. So we are all a part of a cosmos, and the more and more people get attached to it will lead to something bigger than what we can even imagine. So I am a firm believer in karma yoga, and I follow Bhagavad Gita. And the most popular lesson that the Bhagavad Gita teaches us is that you should not worry about the results. You should do your work with the purest of intentions, and you should keep working hard towards your goals. So yes, having said that, demotivation aata hai because these results are not measurable. We don't know whether an impact is being created or not, because every time we go to the same ghat, it gets littered every Sunday. But I'll tell you some small events. Like one day during the 3rd or the 4th week of the drive, I was just picking up litter, and I was asking myself, what the hell am I doing in my life? I'm a doctor, I'm a mother. I mean, what is my job coming here and picking up trash? No, nobody even cares. There were a lot of people at the ghat that time, and they were just having fun. They had come to have fun with families, and there I was just picking up trash. So I was just asking myself this question, and at that same moment, a 3-year-old girl came to me and she handed over her chips packet to me because she did not want to litter it. Okay. And she smiled at me, and I realized, it was a sign from the universe that people are watching. They might not come to you and tell you that their thinking is changed because of your work. But there are ways when you get to know that you are being watched, your efforts are being your efforts are keep making a change and impact in people's psychology. Other way of measuring this for me is that whenever I get any Instagram messages on people when they tell that they have stopped using single-use plastic because of our stories, and they have stopped using plastic items in their religious ways because they know that it is going to end up in the Ganga. So these are small pat on the backs that we keep getting, and it keeps us motivated. So basically this work has to be done with a seva bhav. And when seva bhav is there, you are not supposed to expect a result. Whatever result will be there, that will be taken care of by the universe. But for me, the act is pure joy, and for my volunteers too. We love cleaning. We love cleaning the ghat. We love spending 1 hour there, and it is a very enjoyable process for us. So we enjoy the process. We love creating awareness. We love editing videos on sustainability and zero waste. So we are just enjoying what we are doing, and the rest is being taken care of by the universe. And yes, individual actions do take a role because if you can see the awareness of people towards buying single-use plastic water bottles is gradually, there is an increase in awareness among people because of there are a lot of sustainability influencers who are doing a fab job at it, and you can just see by the number of their followers and the likes, views and shares that they are getting on their Instagram handles. It just is a measure that they are making people think, and we are just working in our own silent way and creating a silent mass revolution. Absolutely. And what you see right now is the tip of the iceberg.
I'm sure this is here to stay and this will become a mass movement. जैसे होता है ना, we study in the chemistry की crystallization process में क्या होता है, you have to put a seed Right. and then the crystals keep sticking to it. So that Absolutely. seed or the intention has to be placed by an individual. Mm-hmm. So this is what our work is. We don't know how many people we will influence. We don't know what will be the future of Kanpur Ploggers. But what we do know is that in some way or the other, we will keep creating awareness and we'll keep talking about it. Great, 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 great. Kudos to you. And once again, really to Kanpur Ploggers also, guys, I would like to repeat the Instagram handles. You can follow Dr. Sanjeevani on Mommy Gangakinarewali, which is her Instagram handle. And she's also the founder of Kanpur Ploggers. So both the Instagram handles are very much active. You can check what work what she's doing, all the reels she is putting, all the effort she's putting along with her team for cleaning up drives and spreading the awareness. So, Dr. Sanjeevani, I have seen you actively spreading awareness on plastic pollution, composting, as well as zero waste living. So, जब हम ये plastic की बात करते हैं, so do you think plastic is an just an environmental problem? Because from where we see, ये consumption तो एक individual कर रहा है. So, do you think plastic is not an environmental problem, but a individual or a personal problem? What's your take on that when we see all the littered plastic all around? See, being a doctor, I'm a very big fan of research and reading articles. And the things that moved me into taking actions were also the research part. I had read in an article that microplastic particles were found in the meconium of a newborn child. So meconium is the first feces of a child, and it is made when the child is having, the fetus is taking food from the mother's blood through the placenta. So meaning thereby that the child has still not been exposed to the external environment, nor has he consumed any water, nor has he consumed any food. Right. But still, through the mother's blood and through the placenta, the plastic is reaching his body, which is very shocking. It shook me to the core, and I realized what the enormity of the situation was. And these microplastic particles have been found in our blood, they have been found in our lungs, and every 3 months you get to know a new research. They can cross the blood-brain barrier. Blood-brain barrier is something that even medicines cannot cross. Some medicines also cannot cross. So these microplastic particles are reaching the brain, they are reaching the lungs, the intestines, even the walls of the blood vessels. And they lead to, tiny seeds of inflammation in the body. And inflammation is the beginning of deadly diseases like diabetes, cardiovascular diseases, high blood pressure, and even cancer. Inflammation is one thing that, जिससे कि आपको बच के रहना ही है. Stress leads to inflammation, exposure to pollution leads to inflammation, and inflammation leads to chronic diseases. There is no doubt about it. As a doctor, I know. Right. So anything that can prevent you from inflammation, you should follow that. इसीलिए आजकल इतनी antioxidant rich diet के बारे में बात होती है, because antioxidants also fight with inflammation. And the problem with plastic is that the body doesn't know how to process the plastic or digest the plastic. Right. So it is going to be always there in your body, always create small seeds of inflammation, and your body is always in a state of inflammation because of the microplastics. So there is a quote that says that our ancestors died of old age. We are going to die of pollution or climate change or global warming or plastic pollution. So whenever we go and give awareness talks to students and other people, adults in general, I make it a point to make them realize that you're not doing this for the environment, you're doing it for yourself. Because plastic is in your body, plastic is in my body. We are eating a credit card worth of plastic every week, according to research, and it is alarming, and it has to change. This has to stop, because we want our children to lead healthy lives. We spend a lot of money on what kind of foods our children are going to eat, but we are giving very little importance to what kind of materials we are using at our homes. And anything that cannot be processed by nature will not be able to be processed by a human body itself. We are made from Tatva, and if the Tatva is polluted with plastic, our bodies are all, they are going to get polluted with plastic. There is no doubt about it. So
this is why I emphasize on the fact that you're not doing this for the environment, you're doing it for your family, you're doing it for yourself. Plastic pollution is no longer an environmental problem, it has become a personal problem. So if there's one message that your listeners can take from this podcast is that plastic pollution has to be stopped, because it is our personal problem now. We are not doing this for the environment, we are doing this for ourselves. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And when you are telling me about this plastic, तो even I remember one quote by Anthony T. Hanks who says, "Plastic will be the main ingredient of all our grandchildren's recipes." Because आपने जिस तरह से कहा कि एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक हम unknowingly कंज्यूम कर रहे हैं, हर चीज से जो भी हम खा रहे हैं, मे बी pollutants, मे बी food we eat, the water we drink, it is landing up in not in us, but हमारी आने वाली generations में भी. And आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लास्टिक प्रोसेस करना हमारी बॉडी को नहीं आता है. वी आर नॉट मेंट टू डाइजेस्ट इट. तो ओनली वी ह्यूमंस आर मेकिंग दिस वेस्ट जो नेचर भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. सो यस, हाई टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका कंजम्पशन, उसका यूसेज, उसको घर लाना, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट ओनली अस एंड आवर अर्थ ओनली. ये नहीं है कि हमारे कम प्लास्टिक यूज करने से सिर्फ पड़ोसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो बेनिफिट हमें ही मिलने वाला है. तो वेरी वेल सेड. एंड glad you took out this point when you said कि जब एक छोटे फीटस में भी हमें वो प्लास्टिक के कण नजर आए तो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक हमारे चारों तरफ हर जगह किस तरह से आके बस गया है. छोटी छोटी I mean, this essentially means that human species is being born pre-polluted with plastic in today's day and age. Right. And that is really concerning because we are not meant to consume it. Like हम पहले कहते थे ना, गाय को या डॉग को हम प्लास्टिक खाते देखते थे तो हमें बुरा लगता था. मुझे कभी कभी लगने लगा है आजकल they are also getting used to the way they are consuming it, which is really harming them. बहुत बुरा लगता है देख कर कि जब छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं या छोटी छोटी जो हम ध्यान नहीं देते हैं, कट की हुई चीजें हैं जो हम कचरे के साथ जाने देते हैं, these animals end up eating them, तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है, which is not what nature has given us. तो this is really really concerning because हमें अपनी बॉडी, अपने नेचर और अपने इस अर्थ को बचाने के लिए प्लास्टिक को कम से कम यूज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि जैसे आपका इंस्टाग्राम हैंडल है मॉमी गंगा किनारे वाली, जिसका सबसे पहला वर्ड है मॉमी. सो मुझे ये बताइए कि एक मॉम की जर्नी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी चूज करना कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट था. मैं क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज एक हम दो तरह के ट्रेंड देखते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंजिंग ट्रेंड ऑल्सो, जिसमें हम क्लॉथ डायपर्स का भी यूसेज काफी देख रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस भी काफी देख रहे हैं. बट देयर आर अदर मॉम्स ऑल्सो हु आर फैंसी ऑफ यूजिंग डायपर्स, वाइप्स, टिश्यूज, बिकॉज उनको लगता है नहीं कपड़ा नहीं यूज करना है, नए क्लोथ्स ही यूज करने हैं, प्लास्टिक टॉयज जो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर दिखते हैं उनका यूज करना है. मेरे से अगर मतलब मैं क्यों ये बात करूं, बिकॉज आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल मॉम. मैंने बच्चों के लंगोट भी चेंज किए हुए हैं, कॉटन नैपीज यूज की हुई हैं. आई हैव नेवर यूज डायपर अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत हो, अदरवाइज मैं घर पे तो कभी भी नहीं यूज करती थी. एंड मेरे को अभी भी याद है व्हेन माय किड्स वर स्मॉल, मेरे घर में एक रस्सी रूम में ही लटकी रहती थी जिसके ऊपर वो चेंजिंग क्लॉथ सूख रहा होता था, लंगोट सूख रहे होते. एंड इट्स ओके, आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बिकॉज उस डायपर में उनको बंधे रहना is really not very advisable for the kid also and of course for the earth also. So आपकी जर्नी कैसी रही being a mom and choosing this sustainability when you started the initiative? So I think being the mom was the biggest reason why I became, so strong on sustainability, because I realized what kind of planet I'm going to leave behind for my child. And it seriously surprises me why parents cannot get sustainable, because as parents, our first emotion that comes when we hold our child is that we want to protect them from any harm that can be done to them, right. That that emotion of protection and giving security to our children is the first emotion that I felt as a parent when I held my child. So right. if I know that my child is getting hurt, his health is getting hurt by pollution, global warming, climate change, it is a threat to his health, his age, his
his well-being in general. So it becomes my responsibility as a mother and as a parent to do something about it. And I cannot wait for the government to take action, because अगर आपका बच्चा बीमार होगा तो आप ये नहीं वेट करोगे कि डॉक्टर आपके घर आएगा और उसको ठीक करेगा, आप खुद कुछ एक्शन लोगे, बिल्कुल. whatever action you can take in your own individual capacity, you will take it. आप ये नहीं सोचोगे कि अरे इससे मेरे एफर्ट से क्या हो जाएगा और मुझे तो डॉक्टरी आती ही नहीं है, आप कुछ ना कुछ करोगे. दिस इज व्हाट योर इंस्टिंक्ट इज, right? So I really don't understand why parents cannot get sustainable, and how can parents allow their children to drink bottled plastic water and stuff like that. And yes, I also became a cloth diapering mom. I introduced myself to a lot of ways of sustainable parenting. And one important thing that I would like to tell here is that इसमें marketing का बहुत बड़ा role है. Yesterday I was having a discussion with somebody. You will not see ads of apples, bananas or lychee on TV, because there's no brand that is making it. Nature is making it, and nature does not market itself, right? There are ads that will tell you that Nutella breakfast is good, but we all know Nutella is 90% sugar. But they are selling it in the way that makes parents feel guilty कि अच्छा breakfast अच्छा healthy कराना है तो पराठे में Nutella लगा के देना है, right? So similarly, when we talk about sustainable items like a reusable steel bottle or a cloth diaper in general, because these are not consumables, there is a circularity in their using, we will keep reusing them, तो obviously इनका market बड़ा नहीं हो सकता है. A same person is not going to buy like 300-400 cloth diapers in her lifetime, right? That is not the case with disposable diapers. तो earning money का जो source है, that is disposable things, because just like fast fashion, they keep dying, and you keep needing new stuff, you keep needing to buy new stuff, which is why marketing is done of all these things, right? Which is why we don't see the marketing of sustainable products around us. And it plays with our psychology. Advertising there are documentaries made on how advertising plays with our psychology. Right. So I think we have to be very mindful and conscious of the content we are consuming, of the way we are getting influenced in our ways of thinking, because marketing guys can वो तो गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं. They will make you feel कि अगर आप अच्छे मदर तभी हो जब आप एक disposable diaper बच्चे को पहना रहे हो, because then only your child is going to be comfortable, and वो smiling kid का वीडियो दिखा देते हैं सोते हुए. So it makes you feel, it plays with the psychology and the emotion of the parents. Right. So this is a very, very big role that marketing and consumeristic society capitalism has to play in consumption of disposable stuff that is harmful to the environment. यही रूल आपका fast fashion में लगता है, और यही रूल आपका in other non biodegradable items में लगता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड डॉक्टर संजीव ने अपनी बात बिल्कुल सही कही कि ये एडवर्टाइजमेंट्स और ये हमारे ब्रेन के साथ खेलते हैं. मार्केट में निकल जाओ तो फ्लैशी क्लोथ्स दिख रहे होते हैं, डायपर के एड में वो दिखाया जाता है कि रात भर की नींद और सुकून. बट देन वी शुड बी माइंडफुल, वी शुड बी थॉटफुल कि ऐसा नहीं है कि डायपर्स आने से पहले सो नहीं रहे थे, डायपर्स आने से पहले exactly. नए कपड़े आने से पहले it does make your life comfortable. I agree. I used to use disposable diapers whenever I was traveling outdoors. But 90% of the times my son was using a cloth diaper, and a cloth diaper works as beautifully as a disposable one. Leakage नहीं होता है if you learn to, it has a learning curve. But when you know why you are doing this and what impact it creates on the environment, it makes all the efforts, worth it. Yeah, I think it's all about the comfort, because हम ना हर चीज को उससे भी, उस पैरामीटर से भी लेते हैं. लाइक आपने जैसे डायपर की बात की, ऑफ कोर्स जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल यूज करने में कोई हार्म नहीं है, तो एटलीस्ट आप कम से कम यूज कर रहे हैं. लेकिन अब जैसे आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई हैड माय फर्स्ट सन, सो मुझे वही मॉम मुझे कहती थी कि हर आधे घंटे में बाथरूम इज नियर बाय, जस्ट गो टू द बेसिन एंड वॉशरूम एंड उसको आदत डालो. तो इनिशियली ना बहुत थोड़ा सा इरिटेशन होती थी, यार क्या है उठ के जाना. बट देन आई रियलाइज कि उससे मेरा ही काम सेफ हो रहा है, मुझे डायपर यूज नहीं करना, लंगोट गीला नहीं हो रहा है, कपड़ा गीला नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट कि 1 घंटे में एक बार से मुझे उठ के जाना है उसे लेकर, एंड हैबिट बनती है. कोई थोड़े से एफर्ट्स पुट करने की बात है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलने की बात है, और वो सिर्फ डायपर के लिए नहीं दोस्तों, इट्स सर्टनली फॉर प्लास्टिक की भी हम अगर बात करते हैं कि आप
बल्क में चीजें खरीदिए, आप उतनी ही लीजिए जितनी आपको जरूरत है। इवन मतलब आज ही आपका जब इंस्टाग्राम हैंडल देख रही थी, मैं बहुत ज्यादा मूव हुई थी डॉक्टर संजीवनी आपके उस रील के साथ, जब आई थिंक जन्माष्टमी के बाद की आपने रील डाली थी। एंड नए के नए छोटे छोटे वस्त्र अगरबत्ती के पैकेट Yeah. पीपल हैव जस्ट लेफ्ट इन द गंगा के घाट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि गंगा पानी है तो वो सब कुछ कंज्यूम कर लेगी, ऐसा नहीं है। सी, इट्स इन आवर हैंड्स कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं। उसको भी नेचुरल चीजें पसंद है, ये प्लास्टिक में रैप अगरबत्ती और आपके ये माइक्रो प्लास्टिक से और बहुत सजे सजे जो कपड़े आप छोड़ के जाते हैं। गंगा इज नॉट मेंट टू कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स। सो it is all about being thoughtful, being conscious, and being aware of our surroundings to reduce the consumption of plastic. And awareness, I think, is the very very first thing. And जिस तरह से हमने अभी बात की डॉक्टर संजीवनी, और इस तरह की कितनी ही टीम्स एंड कितने ही लोग हैं जो आपको इस अवेयरनेस की तरफ बढ़ा रहे हैं, आपको कंसर्न करवा रहे हैं कि हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ी सी कोशिश और करनी है, थोड़ा सा अपने दिमाग को अवेयर और बनाना है, थोड़ा सा और कॉन्शियस होना है। एंड जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर संजीवनी ने बताया कि इनको ये काम करना अच्छा लगता है, इन्हें घाट साफ करना अच्छा लगता है। एंड इससे मुझे एक छोटा सा कोट याद आता है कि लव शुडंट बी डिस्पोजेबल, नाइदर शुड आवर प्लैनेट। हमारा प्लैनेट डिस्पोजेबल नहीं है। सो लेट्स कमिट टू लास्टिंग कनेक्शंस एंड सस्टेनेबल चॉइसेस। और ये चॉइसेस सिर्फ हमारे करने, हमारे सोचने और हमारे पिक करने से ही आएंगी, ना कि किसी दूसरे पे ब्लेम डाल के या किसी दूसरे के इंतजार करने से आए। ओके, निकलने से पहले डॉक्टर संजीवनी आपसे एक और सवाल। कानपुर प्लॉगर्स के अंदर आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने कई बार पोस्ट देखी है अबाउट योर अदर इनिशिएटिव्स, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। जैसे कि आई थिंक यू हैव अ झोला बैग, यू हैव सम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अंडर हमारा बाजार। तो आई वुड लाइक टू नो, लाइक माय लिसनर्स वुड आल्सो लाइक टू नो कि व्हाट अदर इनिशिएटिव्स यू अलोंग विद कानपुर प्लॉगर्स आर कमिंग अराउंड विद, जिसमें लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ। सो दीज इनिशिएटिव्स आर समथिंग जो कि हमारे साथ कानपुर से बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। वन इज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, जिसमें कि people donate us clean and dry plastics from their homes and we send it to recyclers who are making furniture out of it, like tree guards, benches, tables, etc. Okay. There's another project of ours, Project Sankalp, in which we ask people to donate us old bed sheets and curtains. You know, it's Diwali time and people usually change their upholstery and everything. Even आपने सोफे का कवर चेंज कराया है तो आप वो भी भेज दो हमें। तो we give employment to underprivileged girls and they make jhola for us out of all this fabric, and we distribute this for free among people who are organizing exhibitions or among street side vendors, and we ask them not to use plastic and use this instead. So we are quite innovative with the kind of projects that we introduce. There's another project in which it's called Project Prayas, in which we go to various buildings and apartments and we set up a collection center and we ask people to donate their stuff, which can be sent for recycling or which can be donated to some people. So the small activities that we keep doing, because we know that everybody cannot come to the plogging drive to do plogging in the morning. So in the initiative of donating clothes and donating plastic, we get couriers from across the country and people send it at their own expense. They have never asked us for money for that. And I get couriers of plastic from as away as Mumbai, Ahmedabad. I mean, I stay in Uttar Pradesh, Hyderabad. So people send us a courier of milk packets, clean dry milk packets. So this is something which your listeners can also do, because जो soft plastic packets है, that is one thing that is not very commonly recycled. Plastic bottles get recycled very easily, so I request your listeners to please sell it to your local rati wala. They will easily take it. Please don't put it in your dustbin, because if you put it in your dustbin along with the wet waste, it will go to the landfills and then rat pickers are going to pick it under unhygienic conditions. It is better that you segregate your dry waste and directly put it into the recycling chain by giving it to your ratiwala instead of throwing it into the dustbin. So plastic packets is one thing जो कि हर जगह recycle नहीं होती है. So for this, there are various initiatives across the country. हमारा भी एक initiative है and we share our address also, जिसमें कि आप हमें वो प्लास्टिक पैकेट्स कुरियर कर देते हैं. एंड यू वोंट बिलीव दैट आवर वॉलंटियर्स गिव अस फीडबैक कि अब हमारा बच्चा टॉफी भी खाता है तो वो भी प्लास्टिक हम
उसकी आदत हो गई है कि वो कार्टन में ही डालेगा, वो उसको डस्टबिन में नहीं डालेगा. एंड दिस Great. इज वेयर द बिहेवियर चेंज हैज कम अमंग पीपल, दैट अगर उन्होंने like day before yesterday I met a person who recycles plastic with us. So Mhm. I saw her opening a notebook जिसमें कि पूरा प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, कवर चढ़ा था. So Hmm. she tore it open, a new notebook, and I was noticing what she does with that plastic. She quietly kept it in her purse because Okay. she knows that she's going home, and she's going to put it in her recycling carton. So Great. these behavior changes, they go a very very long way in how you consume things. So this is one initiative that people from across the country can join us in. Great, great, great. So, guys, I'm sure you have heard like what Dr. Sanjeevni just shared. कि अगर आपके पास प्लास्टिक पैकेट्स हैं सो यू कैन जस्ट फॉलो हर इंस्टाग्राम हैंडल विच आई विल बी रिपीटिंग विच इज मॉमी गंगा किनारे वाली एंड ऑल्सो एज शी इज द फाउंडर ऑफ कानपुर प्लॉगर्स विच इज KANPURPLOGGERS, जिस पर आपको उनके एड्रेसेस आएंगे जहां पर आप अपना प्लास्टिक, वैसे तो आप प्लास्टिक कम से कम लाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप घर पे ले ही आए हैं तो उसे कचरे में ना जाने दें. कोशिश करें कि आप उसे साफ करके ड्राई करके जो एड्रेसेस प्रोवाइडेड हैं उन पे पहुंचा सकें. उसके अलावा आप अपने लोकल रद्दी वाला आशीष सेट कि वहां पर भी पता कर सकते हैं. प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए कई ड्राइव्स ऑल ओवर सिटीज चलती हैं. आपके लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल फेसबुक ग्रुप्स पे भी इस तरह की अपडेट्स हमेशा आती रहती हैं. सो एक बार कचरे के डब्बे में उस प्लास्टिक के लिफाफे को डालने से पहले प्लीज जरूर सोचिए कि क्या मैं इसे किसी ऐसी जगह डाल सकता या सकती हूँ जहां पर इसका रिसाइकलिंग हो सके या रिपर्पस हो सके, रादर दैन कि ये सिर्फ लैंडफिल में जाकर हमारी अर्थ को क्लॉग करे. एंड एज दे सेड दे हैव अदर इनिशिएटिव्स लाइक झोला बैंक, जिसमें कि कुछ झोलेस बनाते हैं सो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. दे हैव अदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आई हैव रेड अबाउट देयर, हमारा बाजार वगैरह. काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो डॉक्टर संजीवनी अपने कानपुर प्लॉगर्स इनिशिएटिव के अंदर चलाती हैं. सो गाइस जस्ट फॉलो देयर इंस्टा हैंडल, जस्ट ट्राई एंड बी मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर ऑफ योर अर्थ, बिकॉज ये सब आगे जाकर हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंचने वाला है. सो कोशिश करें कि हम उन्हें भेंट में प्लास्टिक ना दे बल्कि एक अच्छी, खुशहाल, क्लीन और ग्रीन अर्थ दे सके, रादर देन सिर्फ एक प्लास्टिक क्लॉग ओशन या अर्थ दे सके. So really nice talking to you, Dr. Sanjeevni, and thanks for sharing these छोटा-छोटा stuff जो आपने बताई जो बहुत जरूरी है. Being a mommy, being a doctor, आप ये initiative चला रही है. I really wish Kanpur Ploggers all the very best for all the initiatives, and मैं चाहती हूँ कि हम ये कहते हैं कि आपका काम बढ़े, लेकिन मैं आपको इस तरह से कहना चाहूंगी कि आपका काम कम हो इन द सेंस आपको कम से कम जो ज्यादा सचेत हो कि आपको ज्यादा प्लास्टिक ना इकट्ठा करना पड़े और एक दिन आए कि हमारे घाट खुद ही साफ हो, हमें इस तरह से सफाई करने की जरूरत ना पड़े. सो ग्लैड, गुड टू नो अ लॉट फ्रॉम यू अबाउट द plastic and awareness and how this blogging happens. Thank you very much, Dr. Sanjeevni. Thank you so much for the opportunity, and I'd just like to conclude by saying that we have not inherited the planet from our ancestors. We have borrowed it from our future generation and our children. तो ये कोई दौलत नहीं है जो हम उड़ा दें, जो हमें विरासत में मिली है. Live like there's no tomorrow. This planet and these natural resources are something that we have to preserve for the future generation, because our childhood memories are associated with having fun at the ghat and enjoying natural resources, going to vacations in the mountains, and we want our children and our grandchildren to enjoy the same things in nature. बिकॉज नेचर नहीं है तो फिर हम भी नहीं होंगे, ना हमारी फिजिकल हेल्थ बचेगी, ना हमारी मेंटल हेल्थ बचेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्केरी फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन. So it is our collective responsibility. Environmentalism is not a hobby, or it is not an activism. It should become a habit among everybody. You should practice some form of environmentalism in your own capacity. It can be growing seeds to make plants and donating it for plantation activities, or growing plants on your own, or just saying no to single use plastic coming inside your house, or just collecting the plastic that is in your home and distributing it again to the vegetable vendor, asking him to reuse it. In some form or the other, you must practice environmentalism, because it is no longer a hobby or something fancy that you need to carry forward just because आपको पिक्चर लगानी है इंस्टाग्राम पे. इट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड वी हैव टू incorporate this practice in our lifestyle.
या वेरी वेल से डॉक्टर संजीवनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को एनवायरमेंटल कंसर्न्स को सिर्फ एक मिशन की तरह नहीं, अपनी एक डेली हैबिट की तरह, अपनी एक डेली प्रैक्टिस की तरह अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तभी हम एक ग्रीनर एंड क्लीनर फ्यूचर एंड प्लैनेट की तरफ बढ़ सकते हैं। So, Dr. Sanjeevni, thank you very much for coming over show and sparing your time. I'm sure आप डेंटिस्ट हैं, आप बहुत बिजी रहती हैं, and इस सब के बावजूद आप इस सब के लिए टाइम निकाल लेती हैं। Kudos to you, more strength to you. नवरात्रि चल रही है, so may माँ दुर्गा bless you, give you strength to carry on with your efforts, and wish you all the best for Kanpur Ploggers as well as your handle of Mommy Gangakinarewali. Thank you so much. Thank you for all the kind words, and you're doing a great job too. And I hope to see you interviewing, thousands of people like us who are working in the field of environment and inspiring another tens of thousands of people through your podcast. So more power to us. थैंक यू वेरी मच। यस, मोर पावर टू अस। निकलने से पहले आप ही की कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। डॉक्टर संजीवनी के इंस्टाग्राम हैंडल पर ये पोस्ट पढ़ा और मुझे बहुत प्यारा लगा। माँ के घाट पर हर बार मैंने खुद को थोड़ा और जाना है और पाया है कि क्या मैं कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। लोग सोचते हैं मैं माँ की सेवा कर रही हूँ, मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ माँ मेरा उद्धार कर रही है। सो डॉक्टर संजीवनी, आप कोई सिर्फ माँ उद्धार ही नहीं कर रही है, मैं कहूंगी आप बहुत सक्षम हैं, और बल्कि आप हम जैसे लोगों को बहुत मोटिवेट कर रही हैं इस सब के लिए अवेयर होने के लिए कि हमारे छोटे छोटे से एफर्ट्स कैसे हमें एक अच्छी ग्रीनर क्लीनर प्लैनेट की तरफ बढ़ने में मदद कर सकते हैं। एंड इसी तरह से इंस्पायर करती रहिए, मोटिवेट करती रहिए, एंड 3 cheers to मॉमी गंगा किनारे वही इसी तरह से ग्रो करती रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर ग्रीन तत्वा टॉक्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जय गंगा मैया की। थैंक यू। जय गंगा मैया की। तो ये थी डॉक्टर संजीवनी शर्मा, बेटर नोन एज मॉमी गंगा किनारे वाली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पंचतत्व गर्ल विल बी बैक विद मोर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लास्टिक के यूसेज को कम कीजिए, और हाँ, प्लॉगिंग कीजिए। जॉगिंग के साथ साथ प्लॉगिंग करना आज का नया मंत्र है। सो वॉकिंग, जॉगिंग, प्लॉगिंग। अगर आपके आसपास आप कहीं पे भी कोई प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की हरी पड़ी हुई मिलती है, उसे सिर्फ उठाकर लाना है, फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखना है, आकर अपने कचरे के डब्बे में डालना है, या फिर अपने लोकल रद्दी वाले को देना है, या फिर एनी एड्रेसेस हु आर इनटू रिसाइकलिंग प्लास्टिक उन तक पहुंचाना है। बस इतना ही करना है। So make blogging your new mantra when you're jogging. That's all for today. Thank you very much. Thank you. Pranam. Bye bye. Namaskar.